So today I am giving you an overview about the ideotype breeding. So what is the meaning of ideotype? The first time the concept of ideotype breeding was proposed by Donald in the year 1968 during the working of the crop wheat. So first of all, we clarify the definition of the ideotype. Ideotype is a biological model which expected to perform or behave in predictable manner within a defined environment. I am again repeating the same definition of the ideotype. Ideotype is a biological model which is expected to perform or behave in a predictable manner within a defined environment. This is called the ideotype breeding. So the ideotype breeding method is a type of breeding method like the other breeding method, like the pedigree method, bulk breeding method, backcross breeding method, mass selection, pure line selection. So these mass selection, pure line selection, pedigree method, bulk breeding method, backcross breeding method are the traditional kinds of the breeding method. So what is the meaning of breeding method? Why we require the breeding method? Because any plant variety has to be released, has to be developed by the help of breeding methods like pure line selection method. So the different types of breeding methods are available, and that breeding method is also developed by or produced by a scientist. So this is the old breeding method, the pedigree method, bulk breeding method. So today I am talking about a very new breeding method, that is the ideotype breeding. So what is the meaning of ideotype breeding? Ideotype breeding method is different from the traditional kinds of the breeding method in respect to the several point of view. So first of all, in case of the traditional plant breeding method, we have to focus on only yield. We have to be focused to improve the yield directly. But in case of ideotype breeding, we focus to improve the individual traits, and that trait is directly related to the yield. So this is the major difference between traditional type of breeding method and ideotype breeding method. In case of ideotype breeding method, we focus on the individual plant character, and that character is positively correlated with our main character yield. So that character is positively correlated with yield, that character is selected, and we focus to improve that character. So this is the meaning, this is the work that is done in the case of ideotype breeding. The other very important thing related to the ideotype breeding is that in case of ideotype breeding, before starting the work, before initiating the plant breeding methods to develop the variety, previously I have to prepare a design, prepare a diagram, prepare a manuscript. That manuscript reveals that which type of plant I have to be expected in the future. All the improved character we want to incorporate it in our plant, that character, that trait is written form in the before starting the work. But in case of traditional plant breeding methods, before starting of the work, not designing any work plan, not develop any theoretical plan. But in case of ideotype breeding method, before initiating the breeding method, first we prepare a diagrammatic form or any conceptual model of that work. Which type of character improve is already written form. What is the height of the plant? What is the how much number of tillers in the cereals crop? What is the length of the root? Number of branches per plant. All these characters are freely in the written form, in manuscript or in mind. So this is the
मेजर पॉइंट रिलेटेड टू द आइडियोटाइप ब्रीडिंग। सो क्या है कि आइडियोटाइप ब्रीडिंग में हम लोग क्या करते हैं कि आइडियोटाइप ब्रीडिंग भी एक तरह का प्लांट ब्रीडिंग मेथड है। इससे भी वैरायटी बनाया जाता है या कोई पुराने वैरायटी को इम्प्रूव किया जाता है। तो इसमें करते क्या है कि हम लोग ब्रीडिंग मेथड को स्टार्ट करने से पहले ही हमारे दिमाग में एक आइडिया रहना चाहिए कि हम किस तरह के प्लांट को बनाना चाहते हैं। फ्यूचर में हमारा जो वैरायटी बनेगा वो किस तरह का होगा, उसका सारा कैरेक्टर हमारे पास पहले से लिखना पड़ता है, या दिमाग में एक मैप बना लेते हैं कि हमारे प्लांट का हाइट 100 सेंटीमीटर होगा, इसमें इतना नंबर ऑफ ब्रांचेज होंगे, इतना नंबर ऑफ लीफ होगा, ये ड्वार्फ वैरायटी होगा, और इसका रूट लेंथ इतना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, जितना भी कैरेक्टर है, बोल्ड सीड होगा, इसमें राउंड सीड शेप होगा इसका। तो जो भी कैरेक्टर हमको चाहिए उस वैरायटी में वो पहले ही हम अपने दिमाग में सोच के रखते हैं, और तब उस पर हम लोग को काम करना पड़ता है, तब उस तरह के वैरायटी को बनाते हैं और कम मैच कराते हैं। हम जो पहले बना के चले थे वो टारगेट हमारा फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए इसको आइडियोटाइप ब्रीडिंग बोला जाता है, क्योंकि आइडिया लगाना है यहाँ पे। आइडियोटाइप ब्रीडिंग मतलब आइडिया लगाना, एक आइडियल फॉर्म कि हमारा जो प्लांट होगा फ्यूचर में वो किस तरह का प्लांट होगा, उसका हाइट कितना होगा, उसमें कितना नंबर ऑफ लीफ होंगे, उसमें कितना नंबर ऑफ सीड बनेगा, वो सारा का सारा चीज़ पहले डिसाइड होता है। और एक चीज़ और बता दें यहाँ पे कि किस रीजन के लिए हम वैरायटी को बना रहे हैं। अगर हम ड्रॉट कंडीशन के लिए वैरायटी को बनाते हैं, वैसा रीजन, वैसा एरिया जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ पे ड्रॉट कंडीशन ज़्यादा होता है, तो उस रीजन के लिए अगर हम वैरायटी को बनाएंगे तो हमारा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए कि हमारा डीप रूट सिस्टम होना चाहिए हमारे प्लांट में, नंबर ऑफ लीफ कम होना चाहिए जिससे कि ट्रांसपीरेशन रेट कम होगा, और रूट लेंथ ज़्यादा होना चाहिए जिसके कारण से वाटर एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी है प्लांट का वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये डिसाइड होता है, इसीलिए इसको आइडियोटाइप ब्रीडिंग बोला जाता है। एंड द आइडियोटाइप ब्रीडिंग इज classified on the different categories like the isolation ideotype. In case of isolation ideotype, the plant behave or perform well when it is grown in the free condition, isolated condition, like the cereals crop. In case of cereals crop, that cereals crop is grown more because all the cereals crop comes under the family Gramineae or Poaceae, and the special merit of the Poaceae family is the tillering ability, tillering capacity. The cereals crops bears the more tillers, more number of branches. So that this is the very. So this is the isolation ideotype. Isolation ideotype means the plant grow well in free condition, in isolated condition. So which type of plant grow well in the isolated condition? The cereals crop, because the cereals crop has the tillering capacity, more number of tillers grow. So this type of plant comes under the isolation ideotype. Next ideotype is the competition ideotype. What is the meaning of competition ideotype? In case of competition ideotype, the plant grow well in the very dense condition. Those plant which comes under the competition ideotype, that plant grow well in the dense condition, not free condition. So this is a good competitor, like the segregating generation populations. Segregating generation populations means the F2 generation population. F2 generation population, because the F2 population, every plant has the different type of genetic constitutions. The different type of genotypes are found in the every type of the seed in the F2 population, so that the every plant of the F2 population has the different kinds of the potential of their survival. So that in case of segregating generation, we have to be adopted the competition ideotype. And the next ideotype is the crop ideotype. So what is the meaning of crop ideotype? Crop ideotype means this crop ideotype is a weak competitor. The crop ideotype means the plant grow well
when the crop density, when the weed density is poor in the field condition. This is a weak competitor plant, but it is not isolated as much as possible, or not dense as much as possible, like the competition ideotype. In case of crop ideotype, we have to be select those plant which is cultivated, which is showing in the commercial spacing level, which have to be decided in previously. So in case of wheat, the spacing is 22.5 centimeter. 22.5 centimeter space is maintained in case of the wheat. So this is the commercial spacing. So the crop ideotype perform well in the commercial space. Not much perform well in case of the densely planted, or not much grow well in case of the as much as possible the separated condition, isolated condition. So this is the meaning of the crop ideotype, and crop ideotype is a weak competitor. So ये डिफरेंट तरह का हमारा आइडियोटाइप होता है. एक होता है आपका आइसोलेशन आइडियोटाइप, दूसरा था हमारा कंपटीशन आइडियोटाइप, और तीसरे तरह का जो आइडियोटाइप है वो कौन सा आइडियोटाइप है, वो है आपका क्रॉप आइडियोटाइप. तो आइसोलेशन जो आइडियोटाइप होता है, इसमें हम ये बता रहे हैं कि ये जो प्लांट होगा जो आइसोलेशन आइडियोटाइप में आता है, वो अच्छा परफॉर्म कब करता है, जब इसको हम लोग फ्री कंडीशन में लगाते हैं, आइसोलेटेड कंडीशन में लगाते हैं. ये अकेले में अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा यील्ड आएगा इसका, आइसोलेशन वाले आइडियोटाइप का. तो जो भी सीरियल्स क्रॉप होते हैं, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, ये सब क्या है, ये इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टिलर्स निकलते हैं, तो फ्री कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करता है, आइसोलेटेड कंडीशन में. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेशन आइडियोटाइप बोलते हैं. जो दूसरा तरह का आइडियोटाइप है वो है आपका कंपटीशन आइडियोटाइप. तो कंपटीशन आइडियोटाइप में उस तरह के प्लांट का सिलेक्शन होता है जो कि डेंस कंडीशन में, बहुत ज़्यादा जहाँ पे कंपटीशन है वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. जैसे 3-4 पौधा लगा हुआ है, और वहाँ पे कोई पौधा जो होगा, प्लांट जो होगा आपका, बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत जल्दी उसका हाइट इंक्रीज कर रहा है. तो कौन सा आइडियोटाइप होगा, वो हमारा कंपटीशन आइडियोटाइप होगा. तो कंपटीशन टाइप का आइडियोटाइप कहाँ देखने को मिलता है, सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, F2 जनरेशन में आपको देखने को मिलेगा. क्योंकि जो F2 पॉपुलेशन होता है उसमें हर एक जो सीड होता है, हर एक जो प्लांट होता है, वो अलग अलग जीनोटाइप्स होते हैं, उसके अलग अलग प्लांट का जेनेटिकल कंस्टिट्यूशंस होता है, जिसके वजह से जीनोटाइप अलग होने की वजह से उसका जेनेटिक परफॉर्मेंस भी अलग हो जाता है, उसका फिनोटाइप भी अलग हो जाता है. तो ये अच्छा परफॉर्म करता है हमारा सेग्रीगेटिंग जनरेशन में. तो सेग्रीगेटिंग जनरेशन में हम लोग सिलेक्शन करने के लिए कौन सा आइडियोटाइप यूज करते हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन आइडियोटाइप का यूज किया जाएगा. जो नेक्स्ट जो आइडियोटाइप है वो है क्रॉप आइडियोटाइप. तो क्रॉप आइडियोटाइप में क्या है कि क्रॉप आइडियोटाइप को न तो ज़्यादा डिस्टेंस पसंद है, न तो ज़्यादा आइसोलेटेड कंडीशन में ये परफॉर्म करेगा, और न तो बहुत ज़्यादा डेंस कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करेगा, मतलब अच्छा यील्ड देगा. तो किस कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करेगा ये क्रॉप आइडियोटाइप, ये अच्छा परफॉर्म करेगा आपका जब इसको सूटेबल ऑप्टिमम डिस्टेंस पे लगाया जाएगा. ऑप्टिमम डिस्टेंस का मतलब हुआ कि जो उसका पहले से जो बताया गया है कि इसका स्पेसिंग कितना होगा प्लांट का, उतने स्पेसिंग पे, रिकमेंडेड स्पेसिंग पे अगर आप इसको लगाते हैं तो अच्छा परफॉर्म करेगा वो. और ये वीक कंपटीटर होता है. अगर ज़्यादा वीट का पॉपुलेशन होगा तो ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा. तो इसको हम लोग क्रॉप आइडियोटाइप बोलते हैं. एक और अलग तरह का आइडियोटाइप होता है जिसको मार्केट आइडियोटाइप बोला जाता है. तो मार्केट आइडियोटाइप क्या है, तो मार्केट आइडियोटाइप का मतलब है कि हम अपने प्लांट को, हमारा जो प्लांट है उसमें इस तरह का आइडिया लगाना, इस तरह का बनाना है कि उसका मार्केट वैल्यू इंक्रीज कर जाए. तो मार्केट में कैसे वो पॉपुलर होगा, जब वो देखने में अच्छा होगा, उसका सीड देखने में अच्छा होगा, बोल्ड सीडेड होगा. या फ्रूट का बात करें तो उसमें फ्रूट का शेप अगर अच्छा होता है, प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है, तो इस तरह के आइडियोटाइप को मार्केट आइडियोटाइप बोलते हैं, जो कि मार्केट में इजीली एक्सेप्टेबल हो जाए कंज्यूमर के द्वारा. तो उसको कौन सा आइडियोटाइप बोलते हैं, उसको मार्केट आइडियोटाइप बोला जाता है. तो ये होता है आइडियोटाइप ब्रीडिंग. तो आइडियोटाइप ब्रीडिंग का सिंपल सा मतलब है कि इसमें हम लोग प्लांट ब्रीडिंग मेथड स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, एक आइडिया लगाते हैं कि हमारा प्लांट कैसा होगा फ्यूचर में. उसको पहले ही एक हम लोग रिटन फॉर्म में लिख लेते हैं, या अपने दिमाग में ही रखते हैं
कि हमारे प्लांट का हाइट 100 सेंटीमीटर होगा, इसमें इतना नंबर ऑफ ब्रांचेज होंगे, इसमें प्रोटीन कंटेंट इतना होगा, ये डिजीज रेसिस्टेंट होगा, ये ड्रॉट टॉलरेंट होगा, ये सारा खासियत होगा इसमें। तो ये पहले हम लोग डिसाइड करके रख लेते हैं और तब उसके बाद उस ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम तरह तरह के ब्रीडिंग मेथड को लगाते हैं। तो आई हैव टू बी डिस्कस द सम स्टेप्स दैट फॉलो टू डेवलप द variety from the ideotype breeding method. The first step is to develop the conceptual theoretical model. Firstly develop the conceptual theoretical model. Next, selection of the base material. And after selecting the base material, we have to transfer the desirable genes or incorporating the genes from the source to our recipient genome, our variety. And after the last step is to selection of the best ideotype, best ideal plant. तो सबसे पहला जो स्टेप था वो क्या था कि डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल मॉडल। एक मॉडल बनाना है, जो अभी हम आपको बता रहे हैं। ब्रीडिंग वर्क स्टार्ट करने से पहले, ब्रीडिंग मेथड को लगाने से पहले एक थ्योरेटिकल मॉडल बना के रखना है, दिमाग में एक आइडिया बनाना है कि हमारा प्लांट किस तरह का होगा। उसके बाद हमारा ट्रेट डिसाइड हो गया कि हमारे प्लांट में ये तरह के ट्रेट होंगे। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब उसके लिए वो जो ट्रेट को इंक्रीज़ करना है, यील्ड को इम्प्रूव करना है, उसके लिए जो भी कैरेक्टर है, तो जो कैरेक्टर पॉजिटिवली कोरिलेटेड है हमारे यील्ड से, जैसे कि हाइट हो गया प्लांट का, तो अगर हम हाइट को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा यील्ड इंक्रीज हो जाता है। अगर नंबर ऑफ ब्रांचेज को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा यील्ड इंक्रीज हो जाता है। तो क्या करना पड़ेगा कि आपको अब उसका सोर्स को सर्च करना पड़ेगा। तो कहाँ से सर्च करेंगे, वो जीन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट ट्रेट वाले जीन को। तो आपको जीन पूल से सर्च करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन ऑफ द बेस मटेरियल। तो बेस मटेरियल कहने का मतलब कि हमारा जो ट्रेट जिसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके लिए जो ट्रेट है, उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, वो किस तरह के प्लांट में मिलेगा, उसको सर्च करना है। वहाँ से सर्च हो गया। अब उसके बाद में हमको क्या करना है, ब्रीडिंग मेथड को लगाना है। अब ट्रांसफ़र करना है डिज़ायरेबल जीन को हमारे रेसिपिएंट जीनों में। हम जिस वैरायटी में बनाना चाहते हैं उसमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा जीन को। तो उसके लिए तरह तरह के ब्रीडिंग मेथड को लगा सकते हैं हम लोग बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम लोग को पता है कि द बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड इज यूज टू ट्रांसफर द ओलिगोजेनिक कैरेक्टर, and pedigree method as well as bulk breeding method is used to improve the quantitative type of character. So when we improve the disease resistant quality of our plant, our variety, so which type of breeding method is used to improve the disease resistant of the plant or disease resistant variety we have to be making. So back cross breeding method is very useful for that. And when we improve the drought tolerant capacity of the variety, so the pedigree method is highly utilized to improve the drought tolerant capacity of the plant. So all these things are adopted in these steps. And after that, selection of best crop ideotype, and after that release of the variety. So this is the overview of the ideotype breeding. This ideotype breeding is also known as the crop ideotype, model plant type, model ideotype. These are the synonyms of the ideotype breeding. And first time the ideotype concept was given by Donald in 1968, working with crop wheat. Same ideotype. After the discovery of the ideotype breeding in wheat, the several crops has to been discovered in respect to the ideotype, like ideotype of maize was given by Mock and Pierce in the year 1975. The ideotype of maize was given by firstly Mock and Pierce in the year 1975. Ideotype of rice was given by Jennings in 1964. Similarly, the various types of crops nowadays has to be developed their ideotype. So ideotype is a biological model. Ideotype is a biological model expected to perform or behave in a predictable manner
within a defined environment. This is the actual uh, form of the ideotype. So thank you. I hope that you have to be understand the very good concept about the ideotype breeding, so you can understand the very well the concept of ideotype breeding method. In the next class, in the next lecture, I am coming with other very important topic that is related to the genetics, plant breeding as well as seed technology. Thank you.